In this video, I'm going to talk about for loop, but we have already discussed about for loop in our previous video. Then what's the need to make this video for the for loop again? Well, in our previous video, we talked about for loop, like what's the definition of for loop, why we use for loop, and we saw how you can use for loop. But still the question comes is that how the for loop works, like what happens inside the for loop when you say that for I in range, and let's say I'm giving the range as 5. And when I say 5 here, when I say 5 here and I print, let's say I want to print my name for 5 times, which is Mayank. And if I run this code, then I'm getting Mayank for 5 times. Okay, so that's very simple, and this is how for loop works. And that's very simple. Like there is no need to talk about this stuff. You can just use a range to print the things for multiple times. But still the question is same, how the for loop works. Like it's okay, you can say that over here I'm having a range of 5, so I'm getting this Mayank for 5 times. But still, how? Well, to understand this thing, we can just say that print I, or I can say print I. Okay, so this time I'm gonna print Mayank with the value of I, and the value of I is gonna create all the solutions for you for all the questions I asked you. Like it's gonna give you entire solutions. It's gonna solve all the problems. But still, before that, I just want to end this line. Well, I don't want to end this line. So if you don't want to end a line, if you don't want to print something on new line, you can use something called as comma and equal to and then double inverted comma for 2 times. Okay, so by using this, you're not gonna print something on new line. Like Python initially print everything on new line, and if you don't want anything on new line, you can use this. Okay, so comma and equal to and then double inverted comma. So by using this, you're gonna print Mayank with I, value of I. Okay, and after this you're gonna print task complete. So complete. Okay, so now if I task, not task. Okay, so now if I run this code, then you can see I'm getting outcome as, and let me just say I equal to. Okay, so this time I'm getting outcome as I equal to 0, Mayank I equal to 1, Mayank for I equal to 2, Mayank for I equal to 3, Mayank for I equal to 4, and then the loop is getting break and I'm getting task complete. So now what is happening inside this loop? For every iteration of range, I'm getting different values of I. So here the first value of I is 0 because range starts from 0. So I'm getting the first value is 0 and range goes till 4. So the total values from 0 to 4 is 5. So I'm writing 5 over here, and the things goes from 0 in I, the things goes from 0 till 4. So I am getting this Mayank for how many times? I'm getting this Mayank for 5 times. Okay, and the first time the value of I is 0 and the last time the value of I is 4. Okay, and after 4, when the value of I gets 5, this loop will get break and I will be getting this task complete. Okay, so कुछ इस तरीके से चीज काम करती है, and you can see over here I'm getting task complete at last. But the question comes now, how these things work. Like still the question is same. Like यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये बार बार यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज हो रही है. वेल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रेंज है वो है इटरेबल, है ना. तो इटरेशन हम उस रेंज में कर सकते हैं. तो रेंज हमारा जो है वो है इटरेबल, है ना. रेंज को हमने बार बार 1 से प्लस करा दिया, इसलिए हमारा पहले था 0, बाद में हो गया 1, बाद में हो गया 2, और इस तरीके से रेंज बढ़ते गई और हमारी आई की वैल्यू बढ़ती गई. एक पॉइंट ऐसा है जब हमारी आई की वैल्यू हो गई 5 और उस पॉइंट पे हमारी रेंज सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारी रेंज तो है 0 से लेकर 4 तक, और वहां पर लूप हमारा हो जाता है ब्रेक, है ना. और उसके बाद हम यहाँ पर लिख दिए टास्क कंप्लीट, या आप यहाँ पर ब्रेक भी लिख सकते हो, योर विश, है ना. तो अल्टीमेटली यहाँ पर लूप हमारा इस तरीके से कुछ चलता है विद द हेल्प ऑफ रेंज. But my question is, can we use this stuff with the help of a string or a list or a tuple, something like that? Well, the answer is yes, we can use. And मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आया नहीं, but हाँ मैं समझा दूंगा, है ना. तो इसे मतलब मिटा देते हैं यहाँ से एकदम अच्छे से. And now we'll use string. Okay, so I can say for I in, और मैं यहाँ पे for I in मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है. For I in Mayank. अब that doesn't make any sense, but if I try to print, let's say this time I will print Mayank, not Mayank, let's print Nisha. Okay, so now if I try to print Nisha over here, and if I try to run this code, then you can see over here I'm getting Nisha for 6 time. And why I'm getting Nisha for 6 time? Let's say I want to print Mayank Parik, and for this time I will be getting Nisha for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay, so I'll be getting Nisha for 13 times. So let me just count this. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, why I'm counting? I can just
I have to count. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and last one is 13. Okay, so I'm getting 13 nisha with the help of this. Okay, so why I'm getting 13 and 6 nisha? So let's talk about 6 nisha first, and then we'll talk about 13 nisha. Okay, so I'm getting 6 nisha, and why is the case? Why I'm getting 6 nisha? So there's very simple logic behind this. How this for loop is working for this time. As I talked about iterations, firstly I will get a value of m, and then I will get the value of a. Well, let me just print the value of I. Why I'm explaining you. So I will just print the value of I, and I will just remove this nisha from here. Okay, I can just do like this. So comma and equal to and this. Okay, and over here I can say that I equal to. Okay, so this time it's gonna print the value of I with the nisha. Okay, so over here you can see I'm getting nisha for a. For m, I'm getting the first nisha for m, I'm getting the second nisha for a, I'm getting the third nisha for y, I'm getting 4 nisha for a, and I'm getting 5th nisha for n, and then I'm getting 6th nisha for k. ओके, सो मुझे नाम के हर एक लेटर के लिए एक अलग अलग निशा मिल रही है. ठीक है, तो किस तरीके से चीज काम करिए यहाँ पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है. तो यहाँ पर ये जो फॉर लूप है ये कुछ इस तरीके से चल रहा है. यहाँ पर इटरेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहले हमारा फर्स्ट लेटर हो रहा है, वो जा रहा है आई की वैल्यू के अंदर, बाद में हमारा सेकंड लेटर जा रहा है, बाद में हमारा थर्ड लेटर जा रहा है, बाद में हमारा फोर्थ लेटर जा रहा है, बाद में हमारा फिफ्थ लेटर प्रिंट हो रहा है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हर एक कैरेक्टर अपने आप आई के अंदर जा रहा है और उसकी इक्वल वैल्यू हो जा रही है. ठीक है, जैसे हम लास्ट कैरेक्टर पे आते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट टास्क डन. ओके, and if I run this code, oh, then you can see I'm getting the outcome as task done at last, है ना. तो जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंट हो रही चीज़ है, और अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पर लिस्ट यूज़ करता हूँ, तो लिस्ट आपको होता है वैसे क्या होती है नहीं पता, बता देते हैं. यहाँ पर हम मल्टीपल नंबर स्टोर कर सकते हैं. एंड अब अगर मैं नंबर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिर से हम निशा प्रिंट करा पा रहे हैं, बट इस बार जो आई की वैल्यू है वो 1 2 3 4 नहीं है, वो है हमारे लिस्ट की वैल्यू, है ना. तो लिस्ट की पहली वैल्यू है 24, बाद में 3, बाद में 4, बाद में 35, बाद में 5, है ना. तो अल्टीमेटली चीज़ें तो प्रिंट होगी बट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड दिस. ओके, सो लिस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 5 है, इसलिए 5 बार हुआ. हमारे पास हमने मेरे नाम में 6 कैरेक्टर्स से, इसलिए वो 6 बार प्रिंट हुआ. ठीक है, तो वो जिस तरीके से हम लिस्ट को भी और हम कह सकते हैं हम स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इटरेशंस. एंड हम इटरेशंस के थ्रू ही फॉर लूप यूज़ कर पाते हैं, हम रेंज यूज़ कर पाते हैं, हम ये सारी बातें कर पाते हैं, और हम यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं. हम यहाँ पर ये नाम भी यूज़ कर सकते हैं, और हम बेसिकली नाम ये सब तो पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे. हम एक मॉल का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हम शॉपिंग कार्ट और मतलब अलग अलग आइटम्स की रेट क्या होगी, लाइक स्टफ लाइक दैट. अभी बात करने मतलब बेकार हो जाएगा, बट हम तभी बात करेंगे जब हम ये ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, और ये हम काफ़ी जल्दी करेंगे. हम पहले एरे सीखेंगे और हम नम्फी के बारे में बात करेंगे, 2D एरे, एंड देन विल टॉक अबाउट दिस स्टफ. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय.